Now we move to the other part of today's discussion. कि ये जो 18 सेशंस हुए, लिटरली टेलिंग मी, मतलब मैं अगर मेरा बताऊँ या जेसना का इमोशंस फीलिंग्स शेयर करूँ, वी एंजॉयड अ लॉट. इट वाज अ न्यू एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर. हर ट्रेनिंग में एक्चुअली नया ही एक्सपीरियंस होता है, नए लोग विद न्यू पर्सपेक्टिव, न्यू माइंडसेट. और हमको तो कई बार लगता है ट्रेनिंग नहीं होता तो हमको इतने बढ़िया बढ़िया जेम्स से हम महरूम रह जाते हैं, जैसे तेजवीर सर है, विद्या जी है. और हर ट्रेनिंग में हमारे पास कुछ ना कुछ ऐसे लोग आते हैं जो हमको बहुत सारी चीजें सिखा के जाते हैं. तो हैविंग सेड दैट, तो आई वुड इनवाइट यू ऑल पीपल वन बाय वन कि आपका जो भी फीडबैक है या सजेशन है आप शेयर कीजिए. अगर कुछ गलतियां भी है तो वो भी हाईलाइट कीजिए, सो दैट वी कैन फिक्स इट अप. और तो ऐसा कुछ नहीं कि अच्छा अच्छा ही बोलना हमारे बारे में. आप अच्छा भला बुरा जैसा भी जो भी अपना ओपिनियन दे सकते हो कि आपका एक्सपीरियंस ये पूरे 18-19 सेशंस का कैसा रहा है, व्हाट चेंज इट हैज ब्रॉट टू यू, आपके पर्सपेक्टिव में, अप्रोच में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. और सजेशंस है तो प्लीज फील फ्री टू सजेस्ट व्हाटएवर यू फील शुड बी अपग्रेडेड इन द ट्रेनिंग्स. तो चले फिर किससे स्टार्ट करें? यस प्रिया जी. मैंने कहा मॉनिटर से स्टार्ट करें. टीका मैम का मेरा ये पर्सनल पे मैसेज पॉपअप हुआ, अल्फा 1 इज गोइंग ऑन, डू यू वांट टू डू दिस. फिर मैंने, मेरी आदत है थोड़ा सा ना, मैं भूल जाती हूँ चीजों को, देखना पड़ेगा कहाँ पे कौन से लूप में प्रॉब्लम हो रही है मुझे. एंड देन फिर उसके बाद में मैं, डॉक्टर पंकज और काकुली एंड निशा, हम 4 फ्रेंड्स हैं. हम लोगों ने अपना एक NPKM करके एक अपना एक छोटा सा इंस्टीट्यूट खोला है ऑनलाइन, जिसमें हम पेरेंट्स की हेल्प करते हैं. तो एक हमारी ग्रुप मीटिंग चल रही थी एंड डॉक्टर पंकज टोल्ड मी, मनीषा तुमने देखा क्या, वो अल्फा 1 का आया हुआ है एंड वर्तिका मैडम वाज सेइंग दैट कि इफ यू विल जॉइन सो मेनी थिंग्स विल कम अप, दैट इज न्यू लर्निंग एंड ऑल दिस थिंग्स विल कम अप. तो मैंने कहा हाँ, मुझे भेजा तो है वर्तिका मैम ने. फिर मैंने कहा ओके. फिर मैंने उसको किया एंड देन मैंने आपको मैसेज भी किया था सर कि आई वांट टू ज्वाइन, बट मैंने पे नहीं किया था, फिर मैं भूल गई थी पे करना. एंड देन पंकज ने बोला उनका है ना फिंगरप्रिंट सूत्रा, बहुत अच्छी बुक है, और मैंने अमेजोन पे देखी बट वो अमेजोन पे अवेलेबल नहीं है, बट मैंने उनको पर्सनली अप्रोच किया है, मेरी बुक 1-2 दिन में आ जाएगी करके. अब पंकज ने लिया तो मनीषा कैसे पीछे रह सकती है. फिर मैं गई, मैंने कहा, फिर वो मैंने कविता का मैसेज चेक किया कि कौन सी बुक थी, तो फिर वो फिंगरप्रिंट सूत्रा वाली बुक थी, आपकी वाली. फिर वो अमेजोन पे नहीं थी, मैंने उसको बोला यार अमेजोन पे तो नहीं मिल रही है वो बुक. फिर उसके बाद आपका फिर मैंने ये ज्वाइन कर लिया एंड आफ्टर ज्वाइनिंग ऐसे लगा कि मतलब जब अच्छी चीज आने वाली होती है ना, तो कॉस्मोस जो है वो हर तरफ से आपको मैसेज भेजता है कि डू दिस डू दिस डू दिस. आई एम वेरी मच ब्लेस्ड. अच्छा, मैंने जब फिंगरप्रिंट सूत्रा पे आपकी और जेसना मैम की फोटो देखी थी सर, उस दिन से मुझे पता नहीं क्या आप दोनों के फेस में इतना अट्रैक्शन लगा कि आई वांट दैट, मुझे सीखना है ये सारी चीजें. एंड आई एम वेरी मच ना अमेज कि यार ये हो भी गया, और मैं आप लोगों की क्लास में भी हूँ, और 2 राइटर, 2 जिन्होंने इतना अच्छा फिंगरप्रिंट सूत्रा बुक दिया, एंड दे आर इन फ्रंट ऑफ मी एंड आई गॉट सो मेनी गुड फ्रेंड्स हियर अगेन. और मेरा साउथ से पता नहीं कुछ कनेक्शन मुझे बहुत ज्यादा फील होता है, और साउथ इंडियन से स्पेशली बहुत ज्यादा फील होता है. एंड अगेन जेसना मैडम इज वन ऑफ देम, एंड फ्रॉम मिडना ऑल्सो आई हैव अ ग्रुप ऑफ साउथ इंडियन पीपल ऑल्सो. और महाराष्ट्र, आई एम बॉर्न एंड बॉट अप इन महाराष्ट्र, तो नितिन सर महाराष्ट्र से भी हो ही गया. सो होल जर्नी वाज लाइक कि यू पीपल आर बियॉन्ड इमेजिनेशन. जहां मतलब लोगों की सोच खत्म हो रही है ना, वहां आप लोगों की सोच स्टार्ट हो रही है, ऐसे व्हाट आई अंडरस्टूड. एंड डे बाय डे, एंड टुडे व्हेन आई रेड फिंगरप्रिंट सूत्रा, आज यूनिवर्सिटी लेके गई थी, तो मुझे ऐसे लगा यार मैं कहाँ से शुरू करूं, क्योंकि हर पेज पे इतना नॉलेज था, इतना नॉलेज था. मुझे लगा कि मैं कुछ ऐसे, मेरे पास यंत्र हो ना कि मैं उसको घुट्टी बना के पी जाऊं. बट आई सी दैट कि कितनी मेहनत की है आप लोगों ने उसको एक एक वर्ड को लिखने में, एंड आई रियली एब्जॉर्ब दिस, आई कैन फील दैट. एंड व्हेन आई वाज रीडिंग योर बुक ना, मुझे गूज बम्स हो रहे थे कि यार इट्स रियली, बिकॉज एक रिसर्च पेपर जब मैं लिखती हूँ तो मुझे लगता है 1000 आवर्स मुझे चाहिए होता है एक रिसर्च पेपर को लिखने के लिए, और आपने तो पूरी इतनी एंटायर रिसर्च लिखी है. सो इट्स रियली हेड्स ऑफ टू यू बोथ ऑफ यू. एंड आई हर्ड दैट कि
जितना पेड़ में लदा भदा होता है, मतलब फ्रूटफुल होता है पेड़, जो भी ट्री बहुत ज्यादा उसमें फ्रूट्स होते हैं, वो हमेशा झुका होता है। एंड यू बोथ आर एन एग्जाम्पल ऑफ दिस थिंग्स एंड द वे यू आर हैंड होल्डिंग अस, और कुछ भी पैसे नहीं लेते हो सर आप लोग, वाकई में मतलब मैं तो सोच भी नहीं सकती इतने कम पैसों में लोग इतना सारा भी दे सकते हैं। कैलाश सर। Sir, good evening, both of you and everyone. मैंने जब आपकी बुक पढ़ी थी तो बुक बहुत अच्छी लगी, एंड बिकॉज इस काम को तो मैं काफी पहले से कर रहा हूँ, बहुत से लोग की मैंने ट्रेनिंग्स भी अटेंड की है जो इस फील्ड के हैं, बट जो मेजर डिफरेंस यहाँ पे लगा कि कई जगह मैंने फील किया और ट्रेनिंग में काफी जगह सतह पे रहते थे हम, बहुत डीप में या तो बताते नहीं थे या जो भी रीजन था, बट यहाँ पे एक चीज जो मैंने नोट की कि सतह से बहुत नीचे आप लेके जाते हैं। जो चीज को मैं हमेशा ढूंढता था, अगर ये है तो ऐसा क्यों है, अगर फॉर एग्जांपल अगर पीकॉक अगर एनवायरनमेंट से को सपोर्ट मिल रहा है तो क्यों मिल रहा है, वो चीज आपने बड़ा अच्छा सा एक्सप्लेन किया है। तो मैं इस फील्ड में था तो मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं तो 10 out of 10 दूंगा, एंड वेटिंग फॉर अल्फा 2 and 3। हमारी और नितिन सर आपकी हमारी पहली मुलाकात हुई थी 2019 में चंडीगढ़ में ट्रेनिंग में, तब मैं पहली बार मिला था आपसे, जो ट्रेनिंग अटेंड की थी वहां पे जो थी। एंड फिर मैंने आपकी बुक मंगाई थी अभी लास्ट ईयर, जब मैंने उसको पढ़ा तो बुक वॉज फैंटास्टिक। उससे अच्छी कोई बुक मैंने आज तक पढ़ी नहीं इस फील्ड में, बहुत से डाउट क्लियर हुए, बट बहुत सारी चीजें थी जो मेरे को लगता था कि यार ये कैसे है, क्या है। तो उसके काफी सारे पॉइंट अगर मैं बोलूँ तो आपके इस ट्रेनिंग में कंप्लीट हो गए हैं। एंड अगर मैं अपनी पर्सनल बात करूँ तो डेफिनेटली लेवल मेरा डेफिनेटली यहाँ पे आ गया है, कॉन्फिडेंस में भी, और बेटर जो आगे से क्लाइंट की कंसल्टेशन करूंगा वो है। एंड मतलब इतना सेल्फलेसली आज की डेट में बहुत कम ही लोग हैं जो देते हैं जो आप लोग दे रहे हैं, एंड इट्स रियली हैट्स ऑफ टू बोथ ऑफ यू, एंड वेटिंग फॉर अल्फा 2 अल्फा 3 आगे वाले जो है, एंड माय बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू एंड एवरीबॉडी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू। प्रिया मैम। हाँ जी, मेरी एंट्री भी आपके इधर फिंगरप्रिंट एनालिसिस कोर्स में ऐसी ही हुई है, वार्तिका जी के थ्रू। वार्तिका से 2-3 महीने पहले मैंने कहा था कि व्हाई डोंट यू स्टार्ट सम कोर्स, बिकॉज सुबह हम डीडीएस सेशन हमारा होता है मिदना में, तो आई सी उसकी एनालिसिस थोड़ी डिफरेंट होती है, और हमारे जो चीफ मेंटर है वो भी उसकी ओपिनियन जरूर लेते हैं कि फिंगरप्रिंट दिखाओ, वार्तिका से ओपिनियन लो। सो 2-3 महीने पहले मैंने उससे कहा था, तो उसने बोला कि ये बुक पढ़ लो, बट ये बुक अवेलेबल नहीं थी अमेजोन पे। 2 बार मैंने देखा अमेजोन पे बुक नहीं है। फिर उसके बाद फिर से एक बार मैंने उसको बोला कि तुम स्टार्ट करो, हम मिदना वालों को सिखाओ। तो शी सेड नहीं, देखूंगी, सोचूंगी। देन एक दिन उसका मैसेज आ गया कि we are going to start with this course, if you are interested, you were curious to know. I said yeah, fine. So I went ahead and joined. So यहाँ आके यही है कि एक अनलर्निंग करने में थोड़ा सा स्ट्रगल हो रहा है कुछ कुछ, क्योंकि इतना ज्यादा डीप रूटेड हमारा वो DMIT वाली जो अंडरस्टैंडिंग है, लर्निंग है, लोब्स, हर एक चीज में लोब्स आ जाते हैं सामने, हम लोब्स रिलेट करने लग जाते हैं। ये सब थोड़ा स्ट्रगल हो रहा है। प्लस मैंने अभी आजकल एक क्लिनिकल साइकोलॉजी का भी कोर्स ज्वाइन किया हुआ है, तो वो एक उधर इंटर्नशिप चल रही है, उनकी केस स्टडीज चल रही है, वो सर्टिफिकेशन होना है, तो वो एक बीच में चल रहा है, ये चल रहा है, ये थोड़ा सा इस पे स्ट्रगल हो रहा है। मैंने स्टडी बहुत नहीं की है, क्लासेस यहाँ अटेंड किए, बट एक जो घर पे स्टडी होती है वो उतना ज्यादा नहीं कर पा रही हूँ। मंडे से वो खत्म हो जाएगा, फिर पूरा टाइम इधर ही है। एंड आई वांट टू मेक श्योर कि हाँ सून मैं पूरी तरीके से एकदम सीख जाऊं और रिपोर्ट की जरूरत ना पड़े। And concepts and understanding, and Jesna ma'am, your interpretation and the way you have communicated things is beyond compare. And but दिख रहा है कि अभी पढ़ना है काफी कुछ, सेल्फ स्टडी भी करनी है, स्पेशली इन अंडरस्टैंडिंग द पैटर्न्स। सो वो करना बाकी है, करेंगे। एंड नेक्स्ट होमवर्क जो भी है थर्सडे को पूरा करके लाएंगे, अच्छे से फर्स्ट आने की कोशिश करेंगे क्लास में। बिल्कुल, ये रही ना बात। कोई सजेशन Thank you. हमारे लिए कोई सजेशंस आपके पास हो तो वो भी प्लीज। नहीं, सब कुछ बहुत स्मूथ था, बहुत अच्छे से आप लोगों ने बहुत पेशेंटली हियरिंग दी, सबके ओपिनियंस भी सुने, सबके पॉइंट ऑफ व्यूज भी सुनते हैं, डाउट्स भी क्लियर करते हैं। एवरीथिंग वेंट ऑफ वेरी वेल, जैसा ट्रेनिंग होनी चाहिए इन दोज टर्म्स। यू वर नॉट रशिंग थ्रू एनीथिंग। बट हाँ, एक क्वेश्चन है कि लेवल 2 में क्या होगा? कुछ चीजें पर्दे में रहने दो। देखो, कोई भी ट्रेनिंग के पहले तो हम शेयर करती है सिलेबस,
तो पता चल ही जाएगा। रिवर्स का डिटेल में होगा? उससे भी ज्यादा होगा। आपने जैसे अल्फा 1 में सोच के आए थे उससे कुछ ज्यादा ही मिला, तो डेफिनेटली उसमें इससे डबल ही रहेगा, बिकॉज अब वो बिल्कुल बहुत ही इंटेंसिव तरफ जाएगा एंड ऑफ द डे। लेकिन फर्स्ट स्टेप मतलब फाउंडेशन के बिना हम नहीं ले जा सकते, क्योंकि फिर वो पूरा ब्रेन ड्रेन हो जाएगा, बंदा समझ ही नहीं पाएगा कि हम किस बेस पे बोल रहे हैं। तो बेस बनाना जरूरी था, जो इस ट्रेनिंग में हमने पूरा कोशिश किया। अगर आपको डाउटफुल भी करने में हम कामयाब हो गए हैं तो हम समझेंगे कि ये ट्रेनिंग सफल रही है हमारी। थैंक यू प्रिया बहुत मैम अच्छा, फॉर शेयरिंग योर एम्पल ऑफ एक्सपीरियंस। नॉलेज शेयरिंग, बहुत अच्छी। अभी तो नॉलेज बढ़ी है, अब और रिव्यूइंग चलेगी, दोबारा देखेंगे पीपीटीज को, फिर और ज्यादा इन डेप्थ नॉलेज होगी। अटेंड ऑल योर सेशंस, पर मैंने सारा संभाल के रखा हुआ है और मुझे सारा करना है, और लेवल 2 भी वी विल ज्वाइन श्योर, है ना। तो थोड़ा सा पीक है, बाकी तो सब लोग जो बता रहे हैं वो मार्वेलस है, बहुत सीनियर लोग जुड़े हुए हैं, मेरे को ज्यादा कुछ बोलने का जगह है नहीं। और वी आर इन ऑल इन ए वन एसोसिएशन, और इसको बहुत आगे लेके जाना है इस चीज को, और कॉन्फिडेंस लेवल डे बाय डे हर रिपोर्ट हमारा बढ़ाता ही है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। और जिस एनर्जी से और जिस इन्वेस्टिगेटिव आइडियाज से अपन लोग जो टीम काम कर रही है अल्फा की, तो वो ट्रेमेंडस है सर, सलूट है आप सब लोगों को, है ना। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू। I always thought I know it all. Why should I join? Why should I do any other course? And I had my own Excel sheet, that was giving me the report. But still, in some cases, I used to go to Priya ji, ये रिपोर्ट निकाल दो। तो भगवान मेरे को इस क्लास में लेके आए। आई एम वेरी वेरी थैंकफुल। आई एम 200 times thankful, like 200% thankful. And it just happened. Like this would have been the last thing I would have thought of. Okay, let me learn more. I've done it for 5 years. I was a teacher. Coming here was the biggest blessing. To learn humility, to learn different patterns, what I exactly needed at this stage of my life. Because why did I go to Priya ji for reports? Only for fingerprint identification. And no other report or no other organization, I would say, has this much of depth. The whole reverses and all. Because I have spoken to so many so-called DMIT leaders and the trainers also, because when I got my Excel sheet. So I have no words to thank Finger Sutra, team, family. I have got love from everyone, and I have gained a lot. And from day one, it was like a spiritual class. It was not like a, fingerprint class where we are learning how fingerprints behave. And then it was like acceptance or growth, new words we learned, for the same what we have done in the past 5 years. It was connected, everything was connected to spirituality, everything was connected to life growth. So it is a life coaching program I highly recommend for everyone. Thank you so much, Nitin sir. Thank you, Jesna ma'am. Thank you, Sunanda ma'am. Thank you, Rishi sir. Thank you, my dear family. And big thanks starts with Bhartika. I'll start with gratitude. As usual, people from Midda knows I am a very silent person. I never talk. I never do anything. I only hear. Nobody knows me also. So here, always I had this feeling something is not there, something is not there. Something which was not touching my soul. I learned it. There also the same learning happened, but it was not touching from inside. So I was not very satisfied. So suddenly I saw Bhartika ma'am's thing, and just a word, I just spoke to her. Immediately, nothing I did. I just messaged Nitin sir and got the book. I got the book. Very next day, he's sending me ALFA 1. So immediately, I didn't do anything. Just
paid. And I said, I didn't even ask him, I'm joining, you know, I just, sir, same repay. That's it. I just paid and I'm here. So the immense knowledge which I'm getting here is like, it's soul satisfying. That's what I can say. Because for me, I'm kind of a person always searching, little, I won't say I'm confused, but I'll keep on searching. So maybe I feel that this is a place, and I'll be with you in the journey. If you go Alpha 4, if you go Alpha 5, I'm fine with this. So amazing, sir. Amazing. It's not only the knowledge what you're sharing, the way you're sharing. That's what the beauty is. So you understand all the fingerprints and you know how to give it to everyone. That's where I understood why you took so much of break. Like me, you know, this curiosity brain with the loops. We keep on learning because collective, no? So, but worlds are not like that. They need time. So that's the reason you're giving this time, which I understood that. Amazing, sir. Amazing work. We are blessed and blissed to be with you. And I will try my level best to be your outstanding student. And thank you so very much. Yeah, I think most of them stole my words, the people who spoke before. And 23rd, actually 23rd, 24th, 25th, I didn't attend the sessions. And I was in fact thinking in my mind, because I had a family wedding and I was telling Vartika ji, Arey yaar, I'm not able to attend. And I thought, okay, the course will get over. You know, I was thinking, okay, by the time I'm taking this leave, the entire course will get over. And but I was so happy to see the, you know, Zoom invite coming for the next Monday. I was like, oh, still the classes are going on. So I was really happy because I can, you know, but I was really lost. Like Sujit ji said just now, I was like, after that, because I couldn't listen to the recording, I was kind of lost. I was trying to grasp as much as I could. But if I have to, now that it's a feedback session, now coming to the feedback, like Sujit ji just mentioned, see, the commitment that you guys have, it's not like, you know, when we ask questions of people, I was seeing people are interacting and you guys are answering. And it's so much of not, you know, it's not like a formality. Okay, this person is asking a question, so I have to answer it. And it was so much, you know, everything was going in sync. You know, the training was happening so nicely. We were all so much in, you know, like a family, going in sync, going with the course, understanding, making sure that people are clear before, in the session, before you move ahead and go to the next topic. You know, you make sure that people have absorbed whatever you have told in that session. Though I don't know how many of you, but I feel I'm still in the air. My feet is not on the ground. I feel I understand. When I'm in the session, I feel I am able to understand. But when I get out of the session, I feel, okay, I'm like, you know, I don't know what's happening. I don't know if I've understood anything at all. To say, I think we have hit the gold mine. See, definitely, one thing that I would like to say is, yes, I do thank Midna. Because if I were not in Midna, I wouldn't have got this ALFA invitation from Vartika ji. Right? I mean, I have to be in a certain place to even be connected with ALFA. So I'm really, really happy that I've been a part of this journey. And I always knew something was like missing, and, you know, something was, missing, because even when I used to counsel, I'm more than a decoder. I think I'm more of a counselor. I see myself more as something, if I can be a part of someone's life, if I can touch somebody's life in some way, in 1%, I think that's a great feeling. I think you guys are doing that in a very mind-blowing way. So I always felt that there is something more to this. So I'm so glad that I have hit the gold mine. You guys are so deep with your knowledge, and so committed, so authentic, I have always felt deep in my heart that people who are really, really, very, very knowledgeable. Actually, knowledge and humility should be directly proportional. And when you see people where they reach a great heights, and it will be inversely proportional. A lot of people, if you see, they'll be CEOs, but then they'll have this
attitude that you can't even approach them. But here I can, true knowledge is then there's a lot of humility. So I don't know how I sound, but Jasna ma'am, Nitinji, I think there is so much of humility. You don't have to shout it out at all. We can understand. We can actually sense that you guys are really, really. We are hearing everything from the horse's mouth. So it's like a really wonderful thing for a participant who's learning something. It's a great gold mine. So I don't know how much. And one more thing, I might sound really unconventional with this question. I do have a couple of questions. So one thing is in ALFA. Okay, don't mistake me for asking this. So as a participant, if I just do ALFA 1 and I don't do 2 and 3, will I not? I mean, will I be able to effectively counsel somebody, or is it like it's all interlinked? I have to complete. So now that I've invested so much time in ALFA 1, does it become only sensible if I attend 2 and 3 or 4, 5? I don't know how many are there. Does it make sense only if I attend those things? Nothing like that. If you wish, you can attend. But whatever you have understood and learned from ALFA 1, even if you apply that is more than enough. मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ, दुनिया को इतने knowledge की जरूरत नहीं, but as a counselor you should have. Yeah. Right? तो case to case basis पे you can grow, not an issue. But हमारे end से कभी भी ऐसा push नहीं होता है कि you should attend all the levels. And to be honest, हमने वर्तिका जी को भी कभी नहीं बोला था कि आप अपने friends को लाओ करके. He felt कि she got something new perspective, so that you people should also be benefited. So that's the way we operate, to be honest. Okay. Because yes. You continue, and I'll add on to it. You add. Actually, this is the way he will tell you, but I will always say, like, after some time, when you're used to this fingerprint and when this becomes easy for you, then that craving will start. Okay. Yeah. This is not enough. I need to get into it. That push and pull will always be there till you get into the minutest detail of interpreting. This science has that magnet, so don't worry. May not be today, but tomorrow, so after you feel like content. Now this is something which is coming naturally for me. Let me go deeper into it. I've seen people doing that. Yeah, the reason I'm asking is there's a reason for it, because I'm so happy with ALFA 1. I feel like there's much information. Iske baad bhi, I mean, if I have more information, I feel I'll get, the more and more information I get, I don't know if I'll be clear or I'll get confused. I'm really not sure. It's just ABCD. Yes. Good evening, everyone. And indeed, it was a great learning. And what I just appreciate most, that you people are emphasizing on the applied side of this training. Practical implication is there, that I appreciate most. Or like something I will take from Manisha also and Jesna ma'am also, that I always pray, like, there is a quote in one shloka is there, Ano Bhadra Kratvo Yantu Vishwavata. Means let noble thoughts come into me from all the directions. This has been always my prayer, because मेरे लाइफ का कुछ पर्पस ऐसा रहा कि आई एम नॉट इनटू कि मैं बहुत एम्बिशियस हूँ, मुझे ये करना है या कुछ है, बट स्टिल यू कांट सिट लाइक अ कैबेज कि कुछ नहीं कर रहे हैं तो आप बैठे हैं लाइक तो बट समथिंग आई जस्ट वांटेड टू डू. तो उस जर्नी में मैं जैसे मेडिटेशन से, ओशो से जुड़ी हुई हूँ, तो बहुत बार ऐसा हुआ कि लोगों के साथ हीलिंग प्रोसेस और क्वांटम हीलिंग से, मेडिटेशन से मैं जुड़ी थी, तो मैंने ये चीज रियलाइज किया कि अगर कोई आता है और हम स्पिरिचुअल बेसिस पे उसकी प्रॉब्लम या उसके लाइफस्टाइल को चेंज करना चाहते हैं, तो आपके पास 2-3 ही ऑप्शन होते हैं कि मेडिटेशन करो. बट लोगों के पास टाइम नहीं है और लोग उसकी तरफ जाना नहीं चाहते हैं. दे डोंट हैव दैट पेशेंट और दैट लाइकिंग. तो मुझे ये एक दिक्कत आने लगी कि विपस्सना हर एक के लिए नहीं है, एक्टिव मेडिटेशन हर एक के लिए नहीं है.
तो उस व्यक्ति की नीड को कैसे जज किया जाए कि व्हाट इज मींस ही और शी इज इंटरनली। तो वहां से धीरे धीरे एक खोज शुरू हुई, और आई एम अ कीन लर्नर, तो ऑलवेज रेडी टू लर्न न्यू थिंग्स. Or being a student of philosophy also, was just going through so many scriptures and all those things. तो वहां पर एक ट्रेनिंग के दौरान प्रिया मैम से मुलाकात हुई. तो प्रिया मैम वाज जस्ट ना डिकोडिंग एवरीथिंग कि हाँ ये होता है, ब्रेन है. तो आई वाज सो मेस्मराइज्ड, एंड देन आई कॉल्ड हर कि ये आप कैसे बता रहे हो, किसी व्यक्ति के बारे में कैसे बता रहे हो आप इतना. तो देन शी टोल्ड मी कि इस तरह का कुछ कोर्स है, जीबीपी है, एंड मिडना इज देयर, पूरा साइकोलॉजी. देन आई जस्ट केप्ट ऑन कॉलिंग हर, आई सर्च्ड ऑल द थिंग्स. So then I joined Midna, और Midna is also, you know, adding a scientific aspect, जो मुझे खाली मेडिटेशन में जो कमी फील हो रही थी कि किस तरह से किसी दूसरे को जाना जाए, तो वहां पर ये जो साइंटिफिक जो स्टेप था ये मिडना ने ऐड किया कि आप कैसे पर्सन को समझ के उसको रेमेडी दोगे. और फिर मिडना में मैं कहूंगी कि प्रिया मैम के द्वारा मैं इंट्रोड्यूस हुई, और थैंक्स टू सनी जी, क्योंकि जब मैंने मिडना की ट्रेनिंग की थी तो सनी जी वाज माय टीचर. तो सनी जी से मैंने क्लासेस अटेंड की. एंड देन थैंक्स टू Bartika also, who introduced me to this ALFA course, and thanks to your whole team, Nitin sir, Jesna ma'am, Chandrasekhar ji, Sunanda ma'am, Rishi ji. So thanks and gratitude to all of you. But still मुझे अभी ऐसा लगता है lot to learn, because जैसे तेजवीर जी को देखती हूँ, विद्या जी को देखती हूँ कि how efficiently, quickly they are just giving the inputs. तो मुझे लगता है कि अभी बहुत सीखना बाकी है. So, but still, just like a good student, I will always try my best to learn more and more from you people. So thank you to all the ALFA family. Gratitude. Thank you, ma'am. हाँ, प्रकाश वर्मा sir. Yeah, I'm Yes. here. First of all, thank you, Jasna ma'am. Thank you, Nitin ji. Thank you, Sunanda ma'am. See, I spent my career almost 33 years I completed, of which half of it was in India. Then, like many other Keralites, went in search of greener pasture. I landed up in Middle East. But if you look at my family, we have lots of Sanskrit scholars. I also studied Sanskrit for 7 years, plus philosophy. My father was a philosophy rank holder from Chennai those days. My grandmother is a poet, translator. My sister is a celebrity translator, translating all bestseller books from English to Malayalam. So, but what I'm trying to say is, I spent all my 33 years in the topmost MNCs. You know how the MNCs work. It's very demanding, very challenging, very professional. So that really shaped me very differently. You know? So, but I was always yearning for going back to a very supportive environment where I can really help people and my social. So I was not really getting fulfillment, and COVID was really an eye-opener, because that's the time I got stranded. I was isolated. So it reached a boiling point where I said, stop and then go back and do something. But at that time, I didn't have any idea of what should be my organization, what identity. But I always wanted to have a unique Indian identity using my Sanskrit and my passion for the ancient Indian wisdom. And that's how Sakhya started. Sakhya itself is a Sanskrit word. And since I have a lot of people in my network with Sanskrit, I've used some words, but again, I was using modern psychology, because I'm a practitioner with a lot of tools. And I had stated in the website that, yes, this is where modern psychology meets ancient Indian wisdom. But I didn't have, at the time, I didn't have any idea how to connect it, And
I was watching one video in Facebook and I was not really listening. And that's the first time I heard Dr. Jasna talking. But I was not really paying attention. But one word really ignited my imagination or caught up my imagination. But that word, strangely, she didn't use throughout this training. I'll tell you which is that word. Keep guessing. Yeah. Because it was about innate nature, predisposition, but that particular word she didn't use. So that's how the story started. And then I was fortunate to meet a colleague of hers, which is Dr. Deepthi, and she's the one told me that something is coming up and then you will be able to join. And so I feel I'm really blessed because now the connect has happened. So I'm really thrilled. And one more thing, yesterday it so happened that all 10 fingers, I could identify it right. So I never believed I could do it. But so my confidence is really up. But I really hate rich counting. I'll be very honest. That's something I don't know how I have to do. It's purely technical and administrative, but let me see that. Other than that, everything is amazing. And again, thanks to the community, all of you were wonderful because I'm really enjoying. I really enjoyed it, thoroughly enjoyed, except for one session I missed, which was the first case study. Other than that, but I watched the video. So I'm really looking forward to the next phase where I apply my learning. And because as someone said a while ago, my company's mission is to transform the lives of individuals, young aspirants, and we are focusing only on career coaching. So I'm sure that this new insight will really going to make a big, impact on how we do things. And so I'm really glad. I'm really glad. And that word you used was barcode, because I'm a retail food person. So that everyone comes with a barcode. That's the word you used at that time. So thank you again. Thank you all of you. And just for the information of everyone. I'll take some time. So I was all has started. I'll take 2-3 minutes to tell the entire story. एक थप्पड़ की शुरुआत है सर। 2012 में मैंने मेरे बेटे को थप्पड़ मारा था, आज से 11 साल पहले। And this is a pretty heavy hand, and I know how power it carries. जिस दिन वो थप्पड़ मारा था, वो कितना हिला आज तक मैंने पूछा नहीं, मैं हिल गया था। So मेरे एक हैं भाई साहब मेंटर, जो मुझे 93 से सिखा रहे थे, बेटा हिप्नोथेरेपी सीख लो, खुद पे काम कर लो। So I happened to call him that day and started with certain sessions on myself. उसके बाद सब छूट गया। 2018 I made a huge mess of myself and no sir pair, and then where I started working on myself. I did worked on myself with the help of hypnosis, hypnotherapy. As a client I took it. Then since I was working continuously on myself, and my mentor is almost 76 now, he said, your speed is too high for me to handle. There is something new in the market. I am not satisfied. If you find it good, you go and test it. He gave me the name of NLP. I said, okay, fine. So let me find who is the best in India, and I signed up with them. I learned NLP, and I said, I came back to him in 3 months' time. I said, boss, it is a very good science. I had agreed. It is like McDonald's. Go, French fries, burger, khaya, maza aaya. थोड़ा देर ठीक लगेगा, बाद में भैंस गई पानी में, कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी. So I thought this is not working, and I requested him कि मुझे I need full access of his knowledge of 35 years. So then he forced me to join clinical hypnotherapy. I joined as an exceptional student. I was given admission along with psychologists and doctors and I don't know what all. So anyway, it was a tough time.
learning about physiology and what all goes inside the brain and this and that. So while working on the assignments, I took up some cases like schizophrenia or autoimmune disorder like lupus and worked on them. And then when he saw those assignments, he said, if you can take up these cases, these are called as serious cases. I said, how would I know? So they came to my work. So kindly, he said, you go and do become a formal psychologist. So 2 years back, I started with psychology. Brindaji, for your information, IGNU, Zindabad. Quick input on the website and admission done. Once I started with that, okay, then I said it is 2 years of time for psychology. Let me, and by that time, I could learn whatever the software part, the mind part of us, okay, how to handle which aspect to be handled. So I was looking, and while clients used to come, it used to take 3 or 4 meetings before they could understand what needs to be changed. In order to reach there faster, I was looking for a tool which can give me an access to understanding the hardware. Because if I know the hardware, it is easy for me to configure software. And that's where Midna journey started, and there I met, I joined Midna. Sunny ji was the one who trained me well. Then Priya ji again dry cleaned me well and started practicing. In Midna, I could discover one thing. In Gurbani, there's a line called as, it's a half line I'm saying. Full line is something else. Half line is Nanak Dukhiya Sab Sansar, that everybody has pain. So then I could find out, okay, that is going on. And typically, as the report reading would have, I have a tendency to go beyond report in certain aspects and find out those, and which makes my friends curious about, okay, where does they come from? So there is something inside which works well and inside this head, and it is doing well. And while doing certain discussions, I found Bhartika ji enlightened person, giving very good answers. And thanks not to you people, thanks to Bhartika ji, for she introduced it here. Okay. So I joined ALFA with all the excitement, something good to learn. And to my astonishment, I get mentors who has thrown challenge onto us. If we have done this journey in all the darkness with all the difficulties, okay, now today they have given access to certain tools as well. Kindly see these tools if they can help you and show us how far you can travel. This is what challenge today you have given us. And I would like to say thank you, but I will do it after Alpha 3, reserved till that time. And for now, my daughter has finished 10th board exams yesterday. This month's program, Alpha 1, she is joining. Oh, super. Thank I you. want young kids. Thank you. Young Thank blood you. coming in. Narayana. So no thank you to you, huh? You बट three हम are. आपको धन्यवाद देंगे कि आपने डिसीजन लिया बेटी को जल्द से जल्द लाने का. जी. तो मैं एक और बोलना चाहूंगा. Sorry, barging in. Tejveer ji, when he presented in Midna, he said he wants to do the work of Lord Krishna. So he is going to be Krishna here, and you have been telling it from day one. And he's a true leader. He inspired everyone. Abhi, we are the torch bearers, and we have to take this forward. That was very inspiring. Thank you, Tejveer ji. तेजवीर सर, क्राउन यानी पगड़ी तो ऑलरेडी आपके पास है, मोर पंख मैं भेज दूंगा आपको. सर अभी तो आप लोगों ने जो चैलेंज फेंका है ना कि हम लोग तो इतनी दूर आके खड़े हैं, तुम 4 कदम भी चल के दिखा दो. So we all on behalf of my friends, हम लोग कंफर्म करते हैं, we have taken that challenge. Oh, Narayana. Nothing more blessing. अभी और कौन रह गया है?